Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. This is Engineer Misbah Sajid and I welcome you all to my channel Talim for Everyone. Chapter 10 Basic Geometry from New Syllabus Mathematics Book 1, or you can say D1. If you are using this book, you may find this chapter 10 on page 233. In this video, we are going to start section 10.1 point lines and plane, and if you are using this book, so you may find the section on page 233. Okay. Before starting this video, I would like to let you know कि exercise 10A से related कुछ questions already मैं cover कर चुकी थी, ठीक है, और कुछ topics भी मैंने जो है cover करने की कोशिश किए थे in the year November 2020. But now I am going to again restart this chapter. जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगी इस चैप्टर से, और जो कवर हुई हुई है उनकी लिंक्स जो है विद द रिलेवेंट टॉपिक की वीडियो में जो है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं शेयर कर दूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो geometry. So this chapter is basically related to geometry, and you know that there are several branches of mathematics and geometry is one of them. What is geometry? Basically, geometry, the word geometry is derived from an ancient word, Greek word geo and metron. The word geo means earth and metron means measurement, means through geometry you can measure each and everything that is available on earth. Okay. Furthermore, geometry is the branch of mathematics that deals with the study of shapes, points, lines, angles, curves, surface, and solids, their relative properties and position. So I hope it's not that much difficult. ज्योमेट्री कौन सी मैथ की ब्रांच और किस लिए यूज होती है. बेसिकली डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, इधर डायमेंशनलेस शेप, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन शेप्स फिगर को स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी पोजीशन को स्टडी करने के लिए जो है ज्योमेट्री की ब्रांच का जो है सहारा लिया जाता है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. So before starting new topic, so here are some basic figures that we may cover in this section, means in this branch of mathematics, like like cylinder, circle, crossing lines, line, and cuboid. Okay. Next is point, the mean and the basic topic of geometry. So the most basic geometrical figure is a point. All other geometrical figures are made up of a collection of points. A point has a position, but it has neither size nor shape. It means that it is a dimensionless quantity. We use dot or cross sometime to mark the position of a point. We normally use capital letter to name point. For example, point A, like this, and a point B as shown in figure below. You will see कि जो है मैंने तो यहाँ पे जो है उनकी जो है शेप भी है और साइज भी है, बट इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट किस तरीके का होता है और क्रॉस जो है किस तरीके से होता है, जस्ट सिंपल. ओके, but in reality point has no size or no shape, but it has a fixed position like upper, lower, right, left, like this. ठीक है, तो आई होप सो ये बेसिक सब टॉपिक था, ये समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन, एंड लाइन के लिए मैं बता दूं, लाइन इज अ 1 डायमेंशन क्वांटिटी, मींस कि इसकी सिर्फ लेंथ होती है. And how can we get lines? First has line segment. So simply, how can we get line? Just by joining 2 points together. Whenever we join 2 points A and B together, or we have sometimes a collection of points and along a straight path with 2 end point, we can easily get a straight line segment. Point A जो corner points होते हैं, point A and point B are called as end points. Means simply हाँ ये कहा गया है
whenever we join 2 points A and B, we have a line segment. Okay, and corner points are called as point B. End points. Corner points, point A and point B, or you can use any letter to name points. It's called as end points. Okay. So here is the sentence that collection of points along a straight path with two endpoints. It means that you have a several um, points, collection of points. Okay, so collection of all these points through a straight path with these corner endpoint is called as line segment. Okay. यहाँ पे एक चीज मैं और बताती चलूं, इफ यू सी एक लाइन सेगमेंट पे देयर आर वेरियस points, so it means that whenever two or more than 2 points are lying on a same line, it is called as collinear point. If not, for example, these all points are on a same line, and if I draw a point above a line and one above a line and one below this line, so all these points are not on the same line, so it means that these points are called as non-collinear points. Okay, so let's continue. Okay, symbol. सिंबल ये है लाइन का हमारे पास, मींस इट नॉट नेसेसरी कि हम बार बार लिखें कि लाइन ए बी या लाइन बी सी या लाइन सी डी। सिंपली हम ए बी, जो भी हमारे पास पॉइंट्स के नेम है ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। इट मींस दैट ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। फाइन। And whereas line segment has a fixed length. Okay, so आगे चलते हैं। Here is a line. It is slightly different from line segment. In uh, this topic, just when we extend the line segment in both direction of the segment indefinitely, unlimited amount, we get a line, simple a line. So okay, like this. Line segment क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक था, and in this case we just extend line segment in both the direction in indefinitely or unlimited amount, so it is a line. And यहाँ पे line का symbol जो है it is somehow same to line segment। यहाँ पे line और line segment का symbol जो है same है। ठीक है। हियर इट्स अगेन लाइन, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है लाइन से। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो लाइन डिस्कशन की जा रही है, यहाँ पे लाइन के जो अभी हमने पढ़ा है सेकंड पे, लाइन सेगमेंट के बाद जो लाइन पढ़ी उसके दोनों तरफ जो क्या हम क्या ड्रॉ करते हैं, एरोहेड। So here it is written that sometimes an arrowhead is drawn at each end of the line to indicate the line will continue indefinitely. So it would be like this. Okay, so here the symbol would be like this। यहाँ पे लाइन का सिंबल डिफरेंट है, और वहां पे जो लाइन है, अगर लाइन के ऊपर सिर्फ सिंपल स्ट्रेट लाइन हो तो कह सकते हैं वो लाइन भी हो सकती है और लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। और मगर अगर यहाँ लेटर के ऊपर जो है ए बी पॉइंट्स के ऊपर दो पॉइंट्स के अल्फाबेट के ऊपर इस तरीके से एरो हो, so it means एरो लाइन हो, तो इट मीन्स दैट लाइन स्पेसिफिकली लाइन की बात होती है। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रे। रे समहाउ लाइक दिस के उसका मीन्स हम एक लाइन सेगमेंट ले लें, एक तरफ तो उसके एंड पॉइंट हो, बट दूसरी तरफ से हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसके आगे एरो लगा दें, सो इट बिकम्स अ रे। So it means explanation ये है कि above figure showing a part of lines, obviously ray is a part of a line which extend indefinitely in only one direction, that is they have only one end point. AB are known as, here according to this figure, AB are known as rays. In above figure the arrowhead is indicating the direction in which the ray extend. So symbol, ये दो सिंबल हैं क्योंकि एक की तरफ से भी हमारी डायरेक्शन जा सकती है और समटाइम्स बी की तरफ से भी। सो नॉट नेसेसरी कि यही फिगर हो सकता है ये रिवर्ट हो जाए, ये जो डायरेक्शन राइट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ भी आ सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट रे। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। इफ यू हैव एनी query related to point, line segment, rays, so you may comment anytime। I will try to respond them as soon as possible। So आगे चलते हैं, let's continue the next topic, intersecting lines।
Intersecting lines के simple है, whenever we have two lines AB and CD according to this figure, so they will intersect or cross each other at a point O, or you can say at any point, then it is called as intersecting lines. Okay, and that common point, that particular point of intersecting lines is called as point of intersection. Okay, and whenever there I would like to add one thing more. Whenever two lines cross each other at a point, then four angles we will get, 1 2 3 4. मैं यहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज रिपीट कर बताती चलूँ, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेक्शन करेंगे. So whenever two lines cross each other at a point, then four angles we will get. Okay, and जो जैसे कि for example angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. For example angle 1 है, उसके सामने वाला जो एंगल है वो जो अपोजिट एंगल्स कहलाया जाता है. For example अगर मैं 4 ले लूँ, इसके सामने वाला एंगल जो है अपोजिट एंगल कहलाया जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल. So angle 1 and angle 2 are a pair of vertical opposite angle, and angle 4, angle 3 are another vertical opposite angle. Pair of another vertical opposite angle. Okay. उसके बाद एक चीज है यहाँ पे, वो ये है कि कोलिनियर पॉइंट्स का ये इंफॉर्मेशन है. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने फिगर दूसरी ड्रॉ की है और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट जो है बुक से ले लिया है. तो सिंपल मैं कुछ चीजें चेंज यहाँ पे कर देती हूँ. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये कर दिया मैंने पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट क्यू. ओके, here it's point AXB. Okay, if you see this ये OBX, if you see this line, then there are 3 points like X, this point A and B. Okay, if you see these 3 points and they are lying on the same line, so it means that it is collinear points. And if you see, however, PXB means this point P, this point X, and this here is जो है movement हो रही है, this point B, X and P. And if you see this, all these 3 points are not lying on the same line, so it means that these are called as not collinear point. Okay, so I hope so यहाँ तक समझ में आया होगा आपके. If you have any query, so you may comment your query anytime, मैं respond करूँगी. Okay, next topic is our planes. Plane simple जो है फ्लैट सरफेस है, 2D डायमेंशनल सरफेस है. इसकी लेंथ भी होती है और हाइट भी होती है. Length in horizontal form and length height in you can say vertical form. Okay, so plane is a flat surface in which you can do anything. For example, मुझे मैं जो लेक्चर दे रही हूँ वो मैं डिजिटल बोर्ड यूज कर रही हूँ. डिजिटल बोर्ड की जो कैपेसिटी वो यहाँ से लेके बस ये ब्लू वाला पोर्शन है. मैं इसी पे ही जो करना चाहूंगी, लिखना चाहूंगी, लिख सकती हूँ, बट मैं यहाँ नहीं लिख पा रही. सो दिस इज नॉट अ प्लेन. सो ओनली दिस इज अ प्लेन फॉर मी. ओके, एंड फॉर यू, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो लेक्चर कॉपी करते हैं ऑब्वियसली किसी पेपर पे कॉपी करते हैं या किसी जो है क्या कहते हैं किसी कॉपी के ऊपर कॉपी करते हैं. सो दैट पर्टिकुलर कॉपी, नोटबुक एंड अ पीस ऑफ पेपर इज अ प्लेन फॉर यू, इज अ flat surface or plane for you, working as a plane. Okay, so according to geometry, what is a plane? Plane is a flat surface in which you can join any 2 points, or you can say any 2 points can join by a line that lies entirely on a surface. Okay. नेक्स्ट है a plane extends indefinitely in 2 dimension. मैंने जैसे कि बताया उसकी जो है लेंथ भी होती है और जो है हाइट भी होती है. ठीक है. It has a no thickness. An example of a plane is a coordinate plane. प्लेन की जो बेसिक एग्जांपल है वो एक्स वाई प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है. मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन से एग्जांपल देना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन. This is a vertical line. You can see that y-axis positive, and here this is y-axis negative. And एक और हम लोग लेंगे, ये लाइन आ गई हमारे पास horizontal line. This is positive x-axis and this is negative x-axis. Okay, positive x. All right. Next is that an example of a plane is coordinate plane. means कि xy plane, इसको हम coordinate plane भी कहते हैं और xy plane भी कहते हैं.
xy plane and coordinate plane is there. A plane is named by 3 points in the plane that are not on the same line. जो plane है basically, जो basic plane है, it is made up of 3 points. 2 points से तो line बन रही है, but more than थ्री पॉइंट्स जो है हमारे पास बेसिक प्लेन बन रहा है, ठीक है, प्लेन बन जाता है, ठीक है। और अब मतलब कि जो भी 3 पॉइंट्स जो भी हमारे पास फिगर बनती है बेसिकली दैट इज प्लेन। जो भी 3 पॉइंट से जो फिगर बनेगी या 4 पॉइंट से जो फिगर बनेगी हम उसको कह देते हैं कि वो प्लेन है। सो प्लेन इज नेम्ड बाय 3 पॉइंट्स, ठीक है, एंड द प्लेन दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो इसी प्लेन में जो है हम 3 पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं हमें, ठीक है। और जो भी हमारे पास फिगर आती है दैट इज बेसिकली अ प्लेन। सो बेसिक प्लेन जो हमारे पास बनता है एक्स वाई प्लेन को यूज करते हुए वो 3 पॉइंट से बनता है। सो दैट्स वाई प्लेन का जो नेम है वो 3 लेटर से भी हम दे सकते हैं और स्पेसिफिकली उसका किसी एक सिंगल लेटर से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया पॉइंट ए, एक मैंने यहाँ पे बनाया फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी, और एक मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना दिया पॉइंट सी। तो यू कैन ज्वाइन 2 पॉइंट्स बाय अ लाइन एट अ टाइम, फॉर एग्जाम्पल ए टू बी, ए टू सी और सी टू बी। अभी यस थोड़ी सी लाइंस सही नहीं बन रही है, बट कोई बात नहीं, मैं सही कर देती हूँ। सिंपल ए टू बी, we can join 2 points by a line, or B to C or C to, ठीक है। So this is basically a plane ABC, or you can say plane Q, all right। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी आप पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो लाइन से, वो सब के सब इसी एक्स वाई प्लेन पे ही रहने चाहिए, नॉट आउटसाइड दिस प्लेन। Here you can see the plane ABC. All right. The simple example of horizontal plane is a room or floor of a room, and vertical plane की simple example है wall. Fine. So I hope so यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। If you have any queries, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to kindly subscribe my channel Talim for everyone, and hit like button and press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहे। So share my channel with your friends and family. So thank you once again, Allah Hafiz.